हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन करेंगे जिसका चैप्टर नंबर है 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका पहला सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा है मायोपिया। तो इसको देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्ट्स है, साइट डिफेक्ट है, जिसको हम फार साइटनेस भी कहते हैं। इससे जो अफेक्टेड पर्संस होते हैं वो कैन सी फार ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। सेकेंड है मायोपिया। मायोपिया है नियर साइटनेस है, जिसको कहते हैं, जिससे अफेक्टेड जो पर्संस होते हैं कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नजदीक की चीजों को वो देख सकते हैं क्लियरली, बट कैन नॉट सी फार, दूर की जो होता है ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो इसे करेक्शंस कैसे कर सकते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए इन दोनों के लिए क्या करते हैं, वो ग्लास चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है, ऑफ रिक्वायर्ड पावर से। तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा ग्लास लगाएंगे, वो ग्लास लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ओके। और मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन ड्यू टू ओल्ड एज, जो ओल्ड एज होने की वजह से होता है, तो वो होता है प्रेस बायोपिया होता है, ओके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। फार पॉइंट क्या हो जाता है, तो ए पर्सन विथ मायोपिया हैव फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी, क्योंकि जनरल आई होता है, जो करेक्ट आई होता है, उसके लिए फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। तो मायोपिया में क्या होता है, वो आगे आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रेस बायोपिया। फिफ्थ क्वेश्चन है योर फ्रेंड कैन रीड ए बुक परफेक्टली वेल बट कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड अनलेस शी सिट ऑन द फ्रंट रो इन क्लास, इज शी शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड। क्या होगा, शॉर्ट साइटेड है या लॉन्ग साइटेड, तो वो होगा शॉर्ट साइटनेस है उसे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, के बीच में डिफरेंस बताना है आपको क्या है। तो सबसे पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पीपल विथ हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस जो होता है, सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली, दूर की चीजें इजीली वो देख सकते हैं, नजदीक की चीजें नहीं देख सकते, जैसे रीडिंग के लिए उन्हें प्रॉब्लम होती है, ओके। मायोपिया क्या होता है, people with myopia nearsightedness means see nearby objects more clearly, nearby objects means रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा उसे, बट दूर की चीजें देखेंगे तो उसे धुंधला दिखाई देगा वो, ओके। नाउ सेकेंड थिंग है कि उसका करेक्ट कैसे करेंगे, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज नीडेड, ओके। और टू करेक्ट मायोपिया के लिए क्या होता है, a concave lens of suitable focal length is needed. Question number 2 says that what is presbyopia? Write two causes of this defect. Name the type of lens which can be used to correct presbyopia. तो प्रेसबायोपिया क्या होता है, वो यूज मींस आफ्टर एज होता है, जैसे एज होता है तो वो होगा प्रेसबायोपिया। उसका डिफिनेशन ये होगा कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग, ओके। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, एज होने से क्या होता है, वो डिक्रीज होते जाता है, ओके। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, मीन्स नजदीक की चीजें नहीं देख पाते हैं, एंड डिस्टिंक्टली, और दूर की चीजें भी नहीं होगी, विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, विदाउट करेक्टिव आई ग्लास के वो नहीं देख पाते हैं, ओके। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया।
इट हैपेंस ड्यू टू, ये किन कारणों से होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस एंड दूसरा वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। टू करेक्ट प्रेस बायोपिया दे यूज बायफोकल लेंसेज, वो क्या यूज करते हैं, बायफोकल लेंस यूज करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ। The upper portion consists of a concave lens. It facilitates distant visions के लिए वो support करता है. The lower part is a convex lens. It facilitates near vision. वो reading के लिए prefer करता है, support करता है. Question number 3 says that the near point of a person suffering from hypermetropia is 50 centimeter from his eye. What is the nature and power of the lens needed to correct this defect? इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए इसमें, ठीक है। तो सपोज एज्यूम करते हैं कि एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, then any object placed at 25 centimeter should be viewed clearly by the person। तो इसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u की वैल्यू इतना हो गया, ओके। और v का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो ये 50 सेंटीमीटर। ये कैसे है, द लेंस विल फॉर्म ए वर्चुअल इमेज एट 50 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस एट विच द पर्सन कैन सी, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रंट है, फ्रंट में आएगा तो -50 सेंटीमीटर। अब यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखो इसका वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो, 1/-50, ठीक है, -1/-25, इसे सॉल्व करो आप, तो हो जाएगा ये -1/50 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/25। ओके, अब देखो क्या होता है कि फिर से यहां से लिखो 1/f इज इक्वल टू, ओके। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, ओके। और इस साइड में हो जाएगा -1 और ये +2, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/50। तो f निकाल सकते हैं, तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा, f की वैल्यू हो जाएगी आपको 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.5 मीटर। f की वैल्यू हो गया, फोकल लेंथ की वैल्यू निकल गया। देन देयरफॉर पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0.5 इज इक्वल टू प्लस में आएगा +2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये इसका पावर ऑफ द लेंस हो जाएगा, पावर ऑफ द लेंस कितना हो गया, +2 डायोप्टर। So the power of lens needed should be 2 diopter. Question number 4, how is the amount of light entering the eye control? तो कैसे हम amount of eye को, amount of light को eye जो करता है कंट्रोल करता है। iris is a thin membrane, iris क्या होता है, एक thin membrane होता है which control pupil, which in turn regulates the amount of light entering the eye by adjusting its size। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ पिपल ऑफ आवर आई इन डीम लाइट में क्या होगा और ब्राइट लाइट में क्या होगा। और दूसरा है नेम द सेल्स ऑन द रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और डीम लाइट। तो इसमें क्या होता है कि इन डीम लाइट योर पिपल एक्सपेंड्स टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर योर आईज, और सेकेंड पोर्शन में है इन ब्राइट लाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, ठीक है। और नेम द सेल्स ऑन द रेटिना में ब्राइट लाइट में कोन्स करता है और डीम लाइट में रॉड्स करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड लेवल क्लियरली द कॉर्निया, इरिस, पिपल,
ciliary muscles, eye lens, retina and optic nerve. तो पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ स्केच करोगे तो कुछ ऐसा स्केच हो जाएगा। अब डिफाइन करते जाते हैं। फर्स्ट है कॉर्निया, a thin membrane which covers the eyeball which allows the light to enter and refracts the light to focus it as the crystalline lens. इसको कहेंगे कॉर्निया। दूसरा पॉइंट है इरिस, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द लाइट इंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ पिपल। थर्ड पॉइंट है पिपल, इट इज ए होल इन द मिडल ऑफ द इरिस थ्रू विच लाइट इंटर्स द आई। Fourth point is ciliary muscles. It adjusts focal length of eye lens by contracting and relaxation so that sharp image can be obtained on the retina. Fifth point है eye lens. It is a convex lens made of transparent and flexible jelly-like material. Its curvature is adjusted by ciliary muscles. Sixth point है retina. It is the part of the eye where image is formed by the eye lens. Seventh point है optic nerve. It sends the image to the brain. Question number 6 का B part है describe the working of the human eye with the help of the above diagram. इस डायग्राम के हेल्प से उसके वर्किंग को बताना है, आई के वर्किंग को तो बताना है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू वो लाइट इंटर करता है। ओके, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आगे तरफ वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. A structure behind the cornea called iris, which is dark muscular diaphragm that control the size of the pupil. The pupil regulates and control the amount of light entering the eye. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. Question number 7 is what is short-sightedness? State the two causes of short-sightedness. With the help of ray diagram show the eye defect short-sightedness और दूसरा है corrections of short-sightedness by using a lens. तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले जानते हैं what is short-sightedness. A short-sighted person means that the short sight of the person, short sight क्या होता है, to see nearby object is normal होगा, but his long sight to see distant object, दूर की चीजें, is defective, उसे देखने में defective होता है. Myopia or short-sighted is that defect of vision due to which a person cannot see the distant object clearly, though he can see the nearby objects clearly. ओके, नियर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख पाता है बट दूर की चीजों को धुंधला देख पाता है. रीजंस इसका क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल्स हो जाते हैं, आई लेंस. ओके, excessive curvature of eye lens and elongation of eyeball, दो रीजंस हैं इसका. ओके, अब क्या करते हैं, उसका डायग्राम देखते हैं. तो फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, एक्चुअली जो नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, वो क्या होता है, वो आगे खिसक जाता है. तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का इस तरह से हो जाएगा और मायोपिक आई का जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वाला पोर्शंस नहीं धुंधलापन आ जाता है. तो वो क्या है, उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, करेक्शंस के लिए एक कॉन्केव लेंस यूज करते हैं. तो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं विथ रिक्वायर्ड पावर. ओके, उस तरह का एस्पेक्ट्स यूज करेंगे तो मायोपिक आईज का जो प्रॉब्लम है वो हम करेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो इसका करेक्शंस क्या हो जाएगा, करेक्शंस होगा बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स मेड फ्रॉम कॉन्केव लेंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द इमेज फॉर्म
रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा है रियल एंड इन्वर्टेड, तीसरा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, चौथा ऑप्शन है रियल एंड इरेक्ट। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, मींस रियल एंड इन्वर्टेड। Question number 2 is that the change in the focal length of human eye is caused due to, किसके कारण होता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिलियरी मसल्स, दूसरा है पिपल, तीसरा है कॉर्निया और चौथा है इरिस। किसकी वजह से होता है? तो वो होता है सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। Question number third, the least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is, तो उसका वैल्यूज क्या है? 25 मीटर, 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू है सी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द persistence of vision for human eye is, option A 1/10th of a second, option B 1/16th of a second, option C 1/6th of the second and D option में 1/18th of a second। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 1/16th of a second। Question number 5, the light sensitive cells of retina which are sensitive to the intensity of light are, पहला कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है बी rods, then सी है both rods and cones and चौथा ऑप्शन है none of these। तो इसका ऑप्शन सी होगा, both rods and cones। Question number 6 is, a person cannot see distinctly object kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using the lens of power। पावर निकालना है उसका। तो क्या करेंगे, जो गिवन दिया हुआ है इससे देख लो क्या क्या निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होगा ना, u कितना है, u इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, नाउ इमेज डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस यानी जहां पे इमेज बनेगा तो v इज इक्वल टू क्या है, लिखा हुआ है बियॉन्ड 2 मीटर, तो v इज इक्वल टू -2 मीटर, ये लिख लिया आपने। अब फोकल लेंथ निकालना यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, -1/u। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो, तो 1/v कितना होता है, 1/v 1/-2 और फिर माइनस हो जाएगा 1/u 1/इंफिनिटी, देन 1/इंफिनिटी क्या होता है, ये टर्म जीरो होता है, तो इज इक्वल लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। यहां से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू -2 मीटर। तो फोकल लेंथ निकलते ही क्या करते हैं, पावर निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है 1/f इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/-2 कर रहे हो तो माइनस ऑफ 0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन देखो इसका बी करेक्ट हो जाता है। Question number 7 says that a student sitting on the last bench can read the letter written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook. Which of the following statements is correct? First option है, the near point of his eyes has receded away. Second, the near point of his eyes has come closer to him. थर्ड है, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। डी ऑप्शन है, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, a prism ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure given below. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसका ऑप्शंस में देखो फर्स्ट है और सेकंड थर्ड इस तरह से। तो पहले देखते हैं कि अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं
तो अगर प्रिज्म को उल्टा रखते हैं तो इस तरह से बन जाएगा, देखो वायलट, इंडिगो, ब्लू। तो तीसरा कलर ब्लू आता है अगर हम ऐसा कंडीशन रखें, तो इसका मतलब बी पोजीशन मीन्स दूसरा वाला पोजीशन ही करेक्ट आंसर होगा। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा कि ये देखो दूसरा ऑप्शंस। Question number 9 says that at noon the sun appears white as, क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड, दूसरा ऑप्शन ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, थर्ड ऑप्शन है ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, डी ऑप्शन है रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड, इसीलिए वो वाइट एज ए वाइट अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट regarding the propagation of light of different colors of white light in air? First option है red light moves fastest, B blue light moves faster than green light, C all the colors of the white light move with the same speed, D yellow light moves with the same speed as that of the red and violet light। इसका ऑप्शन हो जाएगा C all the colors of the white light moves with the same speed। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू इज स्कैटर्ड मोर इजीली, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड मोर इजीली। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए क्या है? फॉर ए नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट ऑफ द आई इज एट इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट टू इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। पहला हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ द स्काई इन ब्लू कलर एंड दूसरा है द रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइड सच एज ए वेरी फाइन सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, रेड लाइट और ब्लू लाइट? कौन सा जो कलर होता है लाइट का वो वेवलेंथ ज्यादा होता है? वो होता है रेड लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ। Question number 6 says that what do you understand by dispersion of light? Dispersion of light से आप क्या समझते हो? The dispersion of light is the phenomenon of splitting of a beam of white light into its 7 constituents color when passed through a transparent medium such as a prism. Question number 7, as light rays pass from air into a glass prism as they refracted towards or away from the normal, क्या होगा? Towards the normal। क्वेश्चन नंबर 8 इज assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है कि, तो assertion देखो क्या कहता है कि some person have the difficulty to see the object in dim light during night। रीजन क्या दे रहा है? कोन्स रिस्पॉन्ड लेस टू द इल्यूमिनेशन। ऑप्शन ए है कि A is incorrect but R is correct। ऑप्शन बी है A is correct and R is incorrect। ऑप्शन सी है both A and R are correct but R is not the correct explanation of A। and ऑप्शन D है both A and R are correct but R is not correct explanation of A। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज कोन्स जो होता है, कोन्स ओनली वर्क इन ब्राइट लाइट एंड दे डू नॉट वर्क इन डार्क। they respond more to illuminations while rod responds less to illumination and are sensitive to dark changes। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 9 क्या है? एसर्शन दिया हुआ है द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, और उसका रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पर
कि द स्काई ऑफ द मून अपीयर्स डार्क, करेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि पहला कह रहा है कि assertion इज करेक्ट और रीजन गलत है। assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। both assertion reasons are correct but reason is not correct explanation of a। both assertion and reasons are correct but reason is the correct explanation of a। इसका ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। इसका रीजन क्या है कि this is because molecules in the air scattered blue light in the sky from the sun instead of red। ओके, इसलिए स्काई ब्लू देता है, दिखाई देता है। because the wavelength of blue light is shorter and scatters more than other lights। क्वेश्चन नंबर 10 का assertion है the human eye has more field of view। ओके, करेक्ट है। रीजन देखो क्या है, फॉर ए नॉर्मल आई द farthest point up to which the eye can see object clearly is infinity तक देख सकते हैं वो। ऑप्शन ए is correct and R is correct। ऑप्शन बी A is correct and R is incorrect। ऑप्शन C both A and R are correct but R is not the correct explanation of A। option D both A and R are correct but R is the correct explanation of A। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि बोथ आर करेक्ट एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। ए स्टूडेंट वेरी क्यूरियसली ट्रेसेस द पाथ ऑफ ए रे थ्रू ए ग्लास स्लैब for different values of the angle of incidence angle I। He then measures the corresponding values of the angle of refraction angle R and the angle of emergence angle E for every value of the angle of incidence। On analyzing these measurements of angles, his conclusions would be। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, डिस्पर्शन एक स्लैब ग्लास स्लैब्स का देख लेते हैं रिफ्रैक्शन का। देखो इंसिडेंट रेज इस तरह से जाएगा, ये आई है। ओके, फिर ग्लास में जैसे आएगा तो नॉर्मल साइड बैंड हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, और फिर इमरजेंट रे होगा। तो देखो आई इज इक्वल टू ई होगा और is less than refracted ray। ओके, तो इसका ऑप्शंस आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। Stars emit their own light and they twinkle due to the atmospheric refraction of light। Stars are very far away from the earth, hence they are considered as point source of light। When the light coming from stars enter the earth's atmosphere, it gets refracted at different levels because of the variation in the air density at different levels of the atmosphere। When the star light refracted by the atmosphere comes more towards us, it appears brighter than when it comes less towards us. Therefore, it appears as if the stars are twinkling at night। Question number 2. Describe the formation of rainbow in the sky with the help of a diagram। We can draw the diagram like this. The water droplets in the atmosphere act like a small prism. These droplets refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। Due to distortion of sunlight and internally reflection, different colors reach to the observer. Hence, rainbow in the sky formed। Question number 3.
why the sun appears red while sunset and sunrise. Explain. During morning and evening time, sun is at the horizon. Sunlight has to travel longer distance in atmosphere. Violets and blue colors etc of shorter wavelength scatter in the space only. The longer wavelength red color reaches to the observer on earth and sun appears reddish. Question number 4 says that why do stars seems higher than they actually are? Illustrate your answer with the help of a diagram. Due to atmospheric refraction, a star appears to be slightly higher than its actual position in the sky. Light from a star is refracted as it leaves space, means vacuum, and enter the earth atmosphere. Higher up in the sky air is rarer, but that nearer the earth's surface air is denser. So as the light from a star comes down, the dense air bends the light more. Due to this refraction of star's light, the star appears to be at a higher position. Now we draw the diagram here in the figure. Through the actual position of though the actual position of star is at A. देखो star at A है actual position, but due to atmospheric refraction it seems higher in the sky at position B. This is because our eye will see the star at that position from where light enters it in the straight line direction. Question number 5 says that what is dispersion of white light? Draw a level diagram to illustrate the recombination of the spectrum of white light. Why it is essential that the two prisms used for the purpose should be identical and placed in an inverted position with respect to each other. Splitting of white light into its constituent colors when it is passed through a prism is called dispersion of white light. Now, if another identical prism is placed in inverted position in front of a prism, then dispersed color obtained from first prism get recombined to produce white light. Question number 6 is with the help of a scattering of light, explain the reason for the difference in colors of the sun as it appears during sunset, sunrise and noon. During the sunrise or sunset, the sun is at horizon. Most of the blue light and other light of shorter wavelength are scattered most. Only the longer wavelength red reaches to us. That's why sun appears red during the sunrise or sunset. At noon, the sun appears white because it is at our head and all wavelength reaches to us due to little of the blue and violet colors are scattered due to least distance traveled by light. Question number 7 says that write the importance of ciliary muscles in the human eye. Name the defect of vision that arises due to gradual weakening of the ciliary muscles. What types of lenses are required by the person suffering from this defect to see the objects clearly? Ciliary muscles changes the curvature of eye lens as per requirement of the eye. This changes the focal length of eye lens. When muscles are relaxed, lens becomes thin and distant objects are seen clearly. While seeing closer objects, muscles contract. This thickens the eye lens
and focal length decreases. Presbyopia is a kind of eye defect in old person due to aging. It happens due to decrease in flexibility of eye lens and weakening of ciliary muscles. He cannot see near objects as well as distant objects, so he has to use bifocal lenses, which consist of concave and convex lenses both. Question number 8 says that a student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Name the defect of vision the boy is suffering from. Then the defect is he is suffering from myopia. Section B में देखो क्या है, state the possible causes of this defect and explain the method of correcting it. Causes of myopia: first is elongation of eyeball, second is excessive curvature of cornea. Concave lens of suitable power is used to correct myopia. Question number 9 is write the function of each of the following parts of human eye: cornea, iris, crystalline, ciliary muscles. Function of human eye: first is cornea, focuses light ray to enter the eye. Second, iris, control and regulate amount of light entering the eye and control the size of pupil. Third, crystalline lens is like a convex lens which converts light rays on the retina. Then ciliary muscles adjust focal length of eye lens by contraction and relaxation of, so that sharp image can be obtained on the retina. Question number 9 का B part, why does the sun appear reddish early in the morning? Will this phenomenon be observed by an astronaut on the moon? Give reason to justify your answer. During morning and evening time, sun is at the horizon. Sunlight has to travel longer distance in atmosphere. Violet and blue colors etc of shorter wavelength scatter in the space only. The longer wavelength red color reaches to the observer on earth and sun appears reddish in color. Now find this answer. Will this happen? Will this phenomenon be observed by an astronaut on the moon? No, because there is no atmosphere on moon and no scattering of light take place there. Question number 10 says that a student suffering from myopia is not able to see distinctly the object placed beyond 5 meters. List two possible reasons due to which this defect of vision may have arisen. With the help of ray diagram explain करना है इसे. Why the student is unable to see distinctly the object placed beyond 5 centimeters from his eyes? Because the student is suffering from myopia. उसका रीजन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रीजन होगा एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. सेकेंड रीजन होगा एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. Second part है the type of the corrective lens used to restore proper vision and how this defect is corrected by the use of this lens. Corrections: by using spectacles made from concave lens of suitable power. उसके बाद देखते हैं with the help of ray diagram, उसे explain करना है. तो for फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इंफिनिटी होता है, बट मायोपिक आई के लिए क्या होता है? इंफिनिटी वो आगे आ जाता है फार पॉइंट. ओके, मायोपिक आई के लिए इस तरह से हो जाएगा, पैरेलल लाइंस आएगा फ्रॉम इंफिनिटी से और रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना के आगे इमेज बनेगा. ओके, नाउ उसको करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं. Part B, 10th question का part B. If in this case the numerical value of the focal length of the corrective lens is
5 मीटर दिया हुआ है. फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. Power of the lens P is equal to 1 by f is the focal length of the lens. F की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर focal length of the lens. Then 1 by 5 is equal to plus 0.2 diopter. Hence, the power of the lens needed should be 0.2 diopter. Question number 11 says that what is atmospheric refraction? What causes atmospheric refraction? The refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. Atmospheric refraction is caused due to the varying optical densities of different layers of Earth's atmosphere. Question number 12, that draw a neat and level diagram of the experimental setup for observing the scattering of light in a colloidal solution of sulfur to show how the sky appears blue and the sun appears red at sunrise and sunset. We have to draw first the diagram, okay, like this. Then due to chemical reaction which occur, we get sulfur as precipitate. We can see that the blue color get scattered due to its smaller wavelength by sulfur particles. If we view it from convex lens L1 source, we see a red patch on screen, mainly because red color reaches screen after passing through colloidal solution containing sulfur. Blue light is scattered more easily due to its smaller wavelength. Competency based क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है कि which natural phenomenon is being shown here. इस फिगर को देखकर कौन सा नेचुरल फेनोमेनन बताया जा रहा है. ऑप्शन ए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो फॉर्मेशन, सी रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन अर्ली इन द मॉर्निंग, डी ब्लू कलर ऑफ स्काई. तो ये जो है जो फिगर दिया हुआ है इससे क्या होता है, ये है रेनबो फॉर्मेशन का, तो ऑप्शन बी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following conditions are necessary for this phenomenon. पहला ऑप्शन है the sun should be behind us. बी ऑप्शन है it should have rained and the sun should be present होना चाहिए. सी none of A and B. डी both A and B. तो इसका आंसर हो जाएगा डी both A and B should be possible. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म शोज. क्या करता है. ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऑप्शन डी डिलेड सनसेट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम. Question number 4 is a glass prism is able to produce a spectrum while white light passes through lid, but a glass slab does not produce any spectrum. Why? तो पहले क्या करते हैं कि दो प्रिज्म को जोड़ देते हैं और ग्लास स्लैब बना लेते हैं ए बी सी डी लाइक दिस. ओके, इन ग्लास स्लैब आल्सो डिस्पर्शन टेक प्लेस एट ए बी सरफेस. ए बी सरफेस पर डिस्पर्शन टेक प्लेस होता है. बट दीज स्प्लिटेड कलर्स इमर्जेस out in the form of a parallel beam which becomes white. A glass slab whose focus are parallel can be considered as comprising two prisms of same refractive angle. These second identical prism can be considered in an inverted position with respect to first prism. When a beam of white light passes from one prism, it gets dispersed, but on passing through the second inverted prism, the spectrum recombine to form a white light. Question number 5th, why do different components of white light deviate through a triangular glass prism? It is because different colors have different wavelength, and the more wavelength a color has, the less it bends. So the 7 colors bend by different amount due to the difference in their wavelength, and so different colors get separated.